to Cortex. Today we will be doing this lab, monitoring multiple projects with cloud monitoring, the ninth lab of level 1 Arcade January. So first we will start this lab and open it in an incognito window. Click I understand. Now click I agree and then agree and continue. Next, जैसा कि हमें देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रोजेक्ट आईडीज दी हुई हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट 1 के नेम पे क्लिक करेंगे एंड एक बार चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट 2 का नाम है उसमें एंड देन उस पर क्लिक करेंगे। Copy the project 2 and check if it is there. Yes, ये यहाँ पे है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 पे स्विच हो गया। नाउ हमें VM इंस्टेंस पे जाना है एंड इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। हम इधर से कंप्यूट इंजन से आके VM इंस्टेंस पे जा सकते हैं। हम विल क्रिएट एन इंस्टेंस। इंस्टेंस का नेम, रीजन एंड जोन हमें दिया हुआ है। ऑलराइट, नेम को आप अच्छी तरीके से कॉपी करना है एंड देन पेस्ट करना है। फॉर रीजन यूरोप वेस्ट 4 it is there and then Europe West for A. Now we have to just create it. आपके लिए जोन और रीजन अलग हो सकते हैं तो आपको उस पर ध्यान देना है। हम इंस्टेंस के बनने का वेट करेंगे। ओके, इंस्टेंस बन चुका है तो हम एक बार चेक माई प्रोग्रेस करेंगे। नेक्स्ट, वी हैव टू क्रिएट अ मॉनिटरिंग मैट्रिक्स को। इसके लिए हम पहले प्रोजेक्ट आईडी 1 को चेक करके ऐड प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट आईडी 1 हमारी यही है। हम यहाँ पे सर्च करेंगे मैट्रिक स्कोप। ऑलराइट, ये यहाँ पे नहीं है। We have to go to monitoring। ऑलराइट, इधर हमें प्रोजेक्ट 2 ही रखना है फिलहाल के लिए। आफ्टर दिस हमें लेफ्ट पैनल यानी कि यहाँ पे सेटिंग में जाना है, देन मैट्रिक्स को, देन वी हैव टू ओके दिस इज आवर 01। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है।
Now we have to click add projects. Then we have to click select projects. अब हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट आईडी है B3E0B, यहाँ पे है हमारा प्रोजेक्ट आईडी, हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल ऐड इट। इसके बाद हमें ग्रुप्स पे जाना है। देन वी हैव टू क्रिएट अ ग्रुप एंड नेम इट डेमो ग्रुप। हमें वैल्यू में इंस्टेंस लिखना है इन स्मॉल। देन हमें क्रिएट करना है click check my progress and it is completed. Now on to the task 3. We have to go to uptime checks. Now we have to create uptime check. We have to enter this following information. Applies to group. Then select demo group and then import. You have to write 22. Frequency, it will be 1 minute. Then you have to click continue. You have to leave the slider on for create an alert option. Uh, okay, it is on. Then click continue. Title we have to enter this and then we have to just test it. And it responded with success. Now we will click create. Check our progress and it is completed. On to the task 4, we have to go to uptime check again and add alert condition. And to add alert policy, click alert condition. Hmm. Now we have selected this previously created alert policy and then we will click delete alert condition. Now we will click select a metric in which we'll uncheck the active and find this. Click VM instance and click uptime check, then check pass, then apply.
Then you have to click add a filter. And now we will set the filter to check ID and select demo group uptime check ID as the value. Click done. Now we have to configure the trigger. Here, then you have to select metric absence, then next. Now turn off configure notifications. Now in the alert policy name field, we have to enter the name as uptime check policy. We'll copy this and then we will click next. Then we will click create policy. Now let's check our progress. And after this, you don't have to do anything. You can just end the lab. The lab is completed. For more such videos, subscribe our channel and like this video if it helped you. Also join our WhatsApp channel to stay updated regarding our videos. Thank you. Then you can end the lab.